सही कंसीलर शेड चुनना काफी मुश्किल हो सकता है। हाउ डू इवन मैच इट टू योर स्किन टोन? शुड यू गो लाइटर, शुड यू गो डार्कर? करे तो क्या करें? चलिए आज मैं आपकी इस मुश्किल को थोड़ा सा आसान कर देती हूँ। हाय गाइस, मैं हूँ नियति और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू पिक द राइट कंसीलर फॉर योर स्किन टोन। पर हमेशा की तरह पहले गो ahead and subscribe to our BeBeautiful channel and also tap on the bell icon ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहो every time we post a new video। अब आप ये तो अग्री करोगे ही कि सही कंसीलर शेड चुनने से पहले सही फॉर्मुलेशन चुनना बहुत जरूरी है। Speaking of which, I recently got my hands on the newly launched Lakme 9 to 5 Primer Plus Matte Liquid Concealers। इस रेंज में 8 different shades है which will suit a wide range of Indian skin tones। Also, after playing around with these concealers, I realized कि इनकी formulation बहुत lightweight है। And staying true to the range, this too has an inbuilt primer and it has SPF 25, which means कि conceal करने के साथ-साथ it will also protect your skin from the harmful UV rays। The creamy matte oil-free formulation of these concealers is super easy to blend. It creates an even toned skin and it delivers a long-lasting soft matte finish। आप इन कंसीलर्स को कई सारी स्किन इश्यूज को छुपाने के लिए यूज कर सकते हो, राइट फ्रॉम हाइडिंग अ ब्लेमिश टू हाइडिंग सनस्पॉट्स, हाइपरपिगमेंटेशन एंड इवन रेडनेस। सो नाउ दैट वी पिक द राइट कंसीलर फॉर्मुलेशन, मैं आपको अब दिखाऊंगी कि आप अपने स्किन टोन के मुताबिक कैसे सही कंसीलर शेड चुन सकते हो। एज अ जनरल रूल, चूज अ स्लाइटली लाइटर शेड फॉर द अंडर आई एरिया। Choose a slightly darker shade if you want to hide a blemish। And choose a shade that matches your skin tone for the rest of your face। As always, remember that the shade of the concealer entirely depends on what you want to use the concealer for। If you have pale to fair skin complexion, then I recommend using the shades nude and ivory to brighten the under eye area। अगर आपको थोड़ी सी warmth add करनी है, then you can go over it with the shade sand। अगर आपका स्किन टोन मेरी तरह मीडियम है, then I like using the shades beige and cinnamon because I feel like they have the right amount of warmth and the right tone, making it an ideal match to brighten and conceal the under eye area। अगर आपका स्किन complexion dusky है, then I recommend using the shades walnut and almond for the under eye area। Lastly, I want to add here कि इस रेंज में दो ऐसे शेड्स हैं, namely walnut and cocoa, जिन्हें आप as a contour भी यूज कर सकते हो if you have a fair to medium skin tone। Now, I really think that these two shades have the right amount of warmth that will help bring out your facial features when used as a contour। So guys, that's how you pick the right concealer for your skin tone। अगर आपको दिखाए गए concealers को purchase करना है, then check out the description box below for purchasing links। हमेशा की तरह जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल बी ब्यूटीफुल को सब्सक्राइब जरूर करें। And while you're at it, ring the bell icon ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहो every time we post a new video। Until next time, bye guys।